Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's get started. So today we'll deal about a little bit of functions, what's called pass by value and pass by reference, right? For example, I'm having a function, okay, called swap. Called what? Before I write it, let me go here, and I'm declaring two variables, int a and b. Now in a, I am dropping say 23, and b, I am putting in 25, and I see out value of that's what I'm seeking. Value of a is equal to a, okay, and now value of b is equal to b, and there, and I'm saying see out value b for swap function. ठीक, वैल्यू बिफोर स्वैप फंक्शन, वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, वैल्यू ऑफ बी क्या होगा, ठीक है. उसके बाद आई विल कॉल द स्वैप, आई विल कॉल व्हाट, and I send it a and b, and put value after swap function, okay, and I'm again printing out a and b. Now I call the swap function. I'm writing swap here, and I'm saying swap int a, p, or int q. You can write it the same names, no problem. This is local, but this will not be this a. Okay, you are sending a and b to this function. It will be copied into this a, and this a is local to this swap function already, right? So it's different from that a. Remember, this a is not same as this a. This will be copied into this dummy variable. It's called dummy variable. This is called actual variable which you send. When you are sending, this is called actual variable a and b, and these are called dummy. You cannot anything here because they are just temporary containers. They will be destroyed when the this brace hits. Okay. So you say int a, b, they are same. You can write in p and q. Getting? And here I want to swap values. I say I will calculate an integer t. Okay. T means a temp variable, temporary variable, and I will swap how? Temp is equal to a is equal to b, b is equal to temp. I'm swapping. I have two containers, for example, a and b. I want to drop b into a, but if I drop b into a will be lost. A will be overwritten. Before I drop b into a, I have to save the a into the temp. I'm saying a into the temp, dropping b into a, and temp into the b. You're getting 1000. This is how it swap. But should it reflect here also? They will not reflect here. If I give it a go,
What's the problem? Hmm? What I'm saying is swap int A int B. There's no need to prototype because I'm writing the function definition before call. If I write the function definition before call, the compiler has already seen the function, so there's no need of prototype. I will tell you. What is the error? Oh, I have not said type. My God, so I should say it white, right? White swap. Return type was not there. It is not a constructor, right? We have to write return type. Okay. There's still somewhere errors in this cout. Parentheses. Parentheses नहीं डाला इसमें. It is parentheses. Again parentheses here. It is the side effect of teaching C also. Anyways, the value before swap is A23 B25, A23 B25. There is no change. It has not swapped it. What I did in the swap function, I drop A into B and B into. It should have been A25 B23, but it does have no effect after swap function. Why? Because I have passed it by value, not by reference. I passed it by, this is called pass by value. I am passing A and B. They will be copied into this A and B, right? But remember, these are different. This A and B is what? If what you are doing with this A and B, it will not reflect with the original A and B. These are dummy variables. If you print here, the same thing, inside the function it has swapped. Okay, value inside swap function, right? Now if you give it a go, now you see value inside swap function, it has swapped. A has 25, B has 23. But when it comes out of this, because this happens in a swap function, when it comes out of this swap function, this A and B local variables will be killed. They are dummy variables. They are not actual variables. So they will not reflect what we did, what we have the original variables A and B, which is 20, 25. So it comes out of the swap function, right? It is still having the same values. This has no effect on these, because what is happening here is we have different variables A and B. They are dummy. They are what? They will be killed when this function swap ends, and then it will not reflect with the original variables. You getting this point or not? Any questions regarding this? But if you want, before you, I will say your point. If I write this function here as a cut. वेट सेकंड पहले ये बता दूँ. हाँ क्या बोल रहे हो? एनबी के जो एक्चुअल वैल्यूज है 23 25. यस. नीचे मतलब? सर कर रहे हैं ना मेन पार्ट में. क्या पार्ट यहाँ पे 23 25 किया तो ये 23 will be copied into this, 25 will be copied into this. Then I swapped them. But whatever is happening here, that's happening on these variables. Okay? They have no relation with the original variables, these A, B. सर फिर इनके वैल्यूज कैसे कॉपी हो गए? मतलब ऊपर हमने देखा ना जब हमने, because we are calling it ना, when we call it we send it. We send A and B. A is copied into this A, B is copied into this B. I'm calling this function ना. I mean मैंने इस function को call किया and I'm sending A and अब मैंने नीचे लाई, ये function ऊपर थी ना. मगर ऊपर कंटेनर्स नहीं. यार ये एक ही बात है, आप ऊपर देखो नीचे लिखो, वो कोई मसला नहीं है. मैंने यहाँ लिखी थी ना, ये कहाँ गया? यहाँ पे लिखी थी ना. मैंने A और B को भेजा
आई कॉल द स्वैप फंक्शन. वो स्वैप फंक्शन कहाँ, ये है ना स्वैप फंक्शन. ए को भेजा, बी को भेजा. जो ए में था वो इस ए में कॉपी हो गया, जो बी में था वो इस. फिर मैंने स्वैपिंग की इन ए और बी को. लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है वो इन वेरिएबल्स को हो रहा है. किनको? सिंपल. अच्छा समझ आया. आपका मेन में जो है, मेन में वेरिएबल्स जो है आपके पास ए और बी. जो स्वैप फंक्शन है, ठीक है, उसमें ए और बी है, ये अलग दो ए बी है. ये ए बी यहाँ पर है, इसमें 23 25 है. ठीक है, यू कॉपी 23 25 इनटू इट. ठीक है, आपने जब स्वैप को कॉल किया आपने भेजा ना ए एंड बी, मींस दिस 23 ऑफ ए इज कॉपीड इनटू द ए ऑफ दिस, राइट. तो 23 विल बी हियर एंड बी का कॉपी होगा इसमें 25. ठीक है, फिर ये इनको स्वैप कर रहा है. जो 23 है उसको टेम्प पे लगा रहा है 23 को. ठीक है, और जो ए है उसमें डाल रहा है बी यानी कि 25, और ए में डाल रहा है टेम्प. टेम्प में क्या है, सो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंज, बट इट विल नॉट रिफ्लेक्ट दिस बिकॉज ये यहाँ पर है, ये अलग है. ये वेरिएबल्स क्या है, these are the actual variables, these are called dummy variables. These are called what? Getting, it has no effect if you change it. But if you want to change it, that's my next point. But before that I would like to say that if I write this function, if I write this function not before the call, I'm writing this function, I'm cutting it, and I write this function after function call. The function call is here, I'm writing function where? After function call. And I give it a go. Now it is having a problem, saying what is this function? Because if I call before the definition, I need a prototype. I need what? Prototype is same as this. Okay? Prototype is same as definition. Yes, we have to put a terminal to write it then. Copy. And you have to write it somewhere before the call. Before the, maybe on the top I will write. Above the main or in the main, मगर before the call. Call से पहले लिखना है. Call से. Now it will not have any complaints. Right? Why it doesn't have any complaints? Because now it has prototype. Prototype means only we are telling compiler that the function is going to come, जो जिसके ये वेरिएबल्स दो होंगे और जिसका रिटर्न टाइप वाइड होगा. अगर कॉल के, ये कॉल ना, दिस इज फंक्शन कॉल, दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये है फंक्शन डेफिनेशन, ये है ठीक है. अगर डेफिनेशन कॉल से, कॉल के बाद है, कॉल के, देन यू नीड ए प्रोटोटाइप. अगर डेफिनेशन पहले ही है, यू कंपाइलर ने फंक्शन देखी पहले, फिर कॉल आ रही है, उसको ऑलरेडी पता है कि फंक्शन है, तो उसको प्रोटोटाइप की जरूरत. अगर फंक्शन बाद में है, कंपाइलर ने फंक्शन नहीं देखी और आप कॉल कर रहे हो, तो कंपाइलर विल कंप्लेन कि ये क्या चीज़ है, मैं इसको जानता ही नहीं. इसलिए उसको प्रिपेयर करने के लिए प्रोटोटाइप देते हैं ऊपर, एंड वी से भैया जी ये फंक्शन ऐसे आने वाली है. ठीक है, इवन इसमें ये ए बी लिखने की जरूरत, इज आर ऑप्शन, यू कैन ओनली इंट इट. हमें सिर्फ ये बताना है कंपाइलर को कि एक फंक्शन आने वाली, इसका नाम स्वैप है, उसके पास दो इंटीजर वेरिएबल आर्गुमेंट्स होंगे और जो रिटर्न करते हैं वाइड. अगर इफ आई गिव से, इट विल स्टिल हैव नो इश्यूज. नाउ देयर आर सम इश्यूज. सर वहां पे लिखा था फंक्शन कॉल, उसको कमेंट नहीं, इसको कमेंट आउट करना. ओहो, मैंने सीधे लिखा ना क्या, राइट. But the problem is, but the question is, it's not changing. It's not changing my actual values, right? I want now कि अगर मैंने swap को a b भेजा, जो भी मैं यहाँ पे करूँ वो actual value variables पे हो, वो dummy variables पे नहीं हो. वो किस पे हो? Then I have to send it by reference. And send by what? C में हम ampersand भेज देते, एड्रेस भेज देते, फिर पॉइंटर से हम काम करते हैं, पॉइंटर से उसके ऊपर काम करते हैं C में. यहाँ पे हमारे पास सिंपल है. अगर मैं इसको भेजना चाहता हूँ इंट ए, कहाँ गया, मैंने कहाँ पे भेजा, कॉल की यहाँ पे ए बी कॉल की, और यहाँ पकड़ू मैं कैसे, मैं कहूँगा इंट एम्परसेंड ए. सी में थोड़ा डिफरेंट था, राइट.
सी में हम यहाँ से एम% बी यानी कि एड्रेस ऑफ एड्रेस भी भेज देते हैं, फिर यहाँ पे पॉइंटर वैल्यू होते थे जो एड्रेस पकड़ते थे, फिर पॉइंटर से काम होता था, पॉइंटर डायरेक्ट एड्रेस पे काम करता था। यहाँ शॉर्ट है, आप ए भी ही भेजो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे एम% भी ले लो, यानी कि ये सीधे एड्रेस लेगा इनका, किनका, ये इन दोनों का एड्रेस लेगा, जो भेज रहे हैं वो इनका एड्रेस भेज रहे हैं, यानी कि जो भी काम होगा वो इन्हीं पे होगा, किन पे। सो इफ यू आर स्वैपिंग हियर इट विल रिफ्लेक्टेड हियर, ठीक है। नाउ वट एवर यू डू हियर it will, the change will be also there. What's happening to this? There's some problem. This same if you're at int a, this with or that, but the problem is what's happening is I don't know what's going on. Write the prototype as ampersand here also. Yes. The prototype conflict हो रहा है ना, conflict is with the prototype, right? Okay, you getting me? So now value of a is 23 25. Inside swap इसने swapping की, इसने a को 25 बनाया, b को क्या बनाया. Now what else here? It is swapped. It's what? It's reflecting the change outside, right? So what does this mean? You getting me or not? Yes, sir. You write here a p or q or a or b, the same thing, right? Write here a or b, it's not an issue. That has no effect, right? So now we have the changes, right? Because I'm saying a is 23, b is 25, then I send it to the swap function here, the swap function, and swap function swaps it. How it swaps it? It drops a into the, Yeah. that's one, Drops A into 10, B A into B, b into a, B into A, and a is equal to A is equal to temp. Simple B- swapping. Yes, sir. a को सेव किया temp में, b डाला a में, फिर temp डाला b में, सीधी बात सर है. वही B कर रहा था सर आपने, सर यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं होंगे, सेम b temp में नहीं करेंगे, सर A आपने डाला ना टेंप में, मैंने यहाँ पे गलत किया. यस सर A आपने बी सर सर Function में? A डाला ना आपने, हाँ, temp में डाला a, b डाला a में, सर A- नीचे B भी को कोड में डालना आपने है। हाँ. A डाला ना वापस, yes yes, इसीलिए वही a वैल्यू, में b में डाला है temp. इसीलिए Yes, yes. मैं कह रहा हूँ करेंगे क्या? So that is it's reflected now, right? Getting? यस सर. Okay, so we have 20, 25, 25. Inside the function is swaps, but outside the function is reflecting now. Because outside I am printing in now what? Which values? I am printing in the main which values? We can reflect it from Actual values, and they have been reflected, right? And I write when I write a prototype, when the function definition is after the function after the function call. If it is before, I don't need any prototype. You getting me? That's all for this.